Bazmee for Bhool Bhulaiyaa 2, Suresh Triveni for Jalsa, and of course Behzad Khambata for A Thursday. A warm welcome to all three of you. I mean, I've never ever, this is such a great combination of directors. So thank you so much for joining me, first of all. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Wonderful. Now, look, I think I'm going to go ahead and just say that all three of you made films where women played essential roles. So, as filmmakers, how were you able to understand the perspective of your lead characters? कितना आप understand कर पाए उस lead characters को? मुझे लगता है कि when we start writing or when we start thinking something, सबसे important होता है कि फिल्म जो है वो कैरेक्टर के थ्रू ही हम पूरा हमारा नरेशन बताते हैं और वो कैरेक्टर्स को उतना आपको समझना ही चाहिए, उतना जानना ही चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये सारे कैरेक्टर को आप मिले हुए हो या देखा हुआ है या उसको इतना अच्छी तरह जानते हो जो शायद वो जो लोग रोल करने वाले हैं वो उतना अच्छा नहीं जानते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म मेकर टू अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर भले हम जिस भी एज में दिखा रहे हैं इसका बचपन क्या हुआ होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहा होगा, इसकी डिसलाइकिंग और लाइकिंग क्या है. एंड जितना भी आप कैरेक्टर पे काम कर सकते हैं वो चाहे स्क्रीन पे हम उतना दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको होगा उतना ही ज्यादा तरीके से आप उसको पोर्ट्रे करवा पाएंगे और एक्टर जो है उसको आप उतना अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि व्हाट इज ऑन योर माइंड. बिकॉज एक्टर्स जो हैं वो चाहे कोई भी हो, कई बहुत खूबसूरत एक्टर्स हैं, लेकिन दे एक्सपेक्ट कि भाई कहीं पे अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो पूछें डायरेक्टर से एंड डायरेक्टर शुड क्लेरिफाई ऑल द डाउट्स ऑफ द एक्टर्स कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है. तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स जो है उन पे काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे काम करते हैं. जी बिल्कुल. See, I think for me, it was once we wrote the structure of the screenplay and once we got down to the dialogues and everything, we started understanding how each character would normally behave. So I personally go with the start, middle and end. Once I have that, then I start filling in the blanks to finish the rest of the screenplay. But with these three people, I actually had a sit down once they were okay with the entire idea of the film, that how the characters would behave, how they would perform, and what their backstories would be. I obviously had an inkling of where they come from, what they do, what sort of histories do they have. But then at some level, I let them go with the flow when we were on set. Mm-hmm. And they got so involved because we did a lot of readings before that. And luckily for me, you've seen the film, obviously, no character interacted with each other. Right. Yes. So all my readings with them were alone. So it would just be me and Yami brainstorming. Yes, Atul sir and Neha were the two characters that kept colliding. So their readings were, so it was very controlled reading. So a lot of things started to change and flourish with the actors itself. Mm-hmm. And I think that became a great process for me. Than just being that, oh, this is exactly what I want. This is exactly what I want when it comes to the feel. But what you want to say, how you want to say it, let us try and play it out. Let's act it out. So I thought that just helped. And then when we were on set, it just flew. It was just easy. I do not look at them as male or female characters. That's been my constant battle. I think they're characters. Gender does play a role in certain decisions that they take. So what is important is what is their character motivation, okay, and what kind of the decisions that they take. Sometimes what happens is, in my case, what happened was I'm always greedy to work with very good actors. Thankfully, I like the idea of having Vidya and Shefali as two names together. Okay, I mean, like two prolific actors. So, of course, as Anees sir said, you have to understand the characters, and after a particular point, it's like a relay race. Like, you're there to win the race, okay, and wherever you're losing the race, you kind of guide them or whatever it is. But apart from that, I do not look at it from a gender perspective. I purely look at it कि यार इस character को जानना बहुत जरूरी है, okay? क्योंकि अगर आप जैसे कहानी आप नहीं बोल सकते, अगर आपकी कहानी आपके characters के around ही है, okay, उनके decisions पे ही है, जैसे सर ने बोला था. तो I think that वो जानना बहुत जरूरी है, irrespective of gender. So and of course
with these two prolific actors, sometimes you have to just kind of be sitting on the side and just believe that, chalo, let me see some terrific performances happening near me as far as that. Right, yeah, and I think that's exactly what happened. And I think ये जो एक बखूबी की बात है आप तीनों में जो है वो आपकी फिल्म में तो कमर्शियल है ही और वो कमर्शियल फैक्टर तो है ही ऑफ कोर्स बट वो आल्सो एक इम्पोर्टेंट सोशल स्ट्रैंड को भी दर्शाता है सुरेश जलसा touches on corruption as well as capitalism. Anees sir, Bhool Bhulaiyaa 2 actually black magic और sibling rivalry को दिखाता है और फिर Thursday Behzad, of course, highlights and addresses sexual abuse. So I think as filmmakers, आपको क्या help करती है entertainment और education को balance करने में? Anisa, will begin with you. I'll be very honest, मैं अपनी फिल्मों में जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा मैसेज दिया है या मैं कुछ बड़ी एजुकेशन देना चाहता हूँ। लेकिन अगर फिल्म के अंदर मैं जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ, एंटरटेनिंग फिल्म एंड जिसमें लोगों को बहुत मजा आए और दो बार, 4 बार, 10 बार लोग देखें, फिल्म एक बड़ी हिट हो, उसके बीच में अगर बनाते बनाते कुछ अच्छी बातें आती हैं तो मुझे खुशी होती है कि चलो भाई इसमें कुछ, वरना मुझे लगता है कि बेसिकली हम लोग जो फिल्में बनाते हैं उसका जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हम ऑलवेज ये कहते हैं कि हमारा जो गुड कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज विन करता है और जिसमें बुराई होती है वो हारता है। तो इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है मकसद बताने का कि भाई अच्छाई जो है वो हमेशा जीतती है। लेकिन मैं अपनी फिल्मों में जानबूझकर ऐसा कुछ जैसे इस फिल्म के अंदर ब्लैक मैजिक जो है वो इनहेरेंट स्टोरी में बहुत जरूरी था कि भाई ये लड़की जो है एक अपनी बहन से कितना जलती है और ये इस तरह की जलसी लोगों में होती है और इस तरह के लोग जो है काफी हद तक आगे जा सकते हैं जो ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करते हैं और वो करते हैं। तो ये इनहेरेंट उस स्क्रिप्ट के अंदर मेरी जरूरत थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि भाई मैं किसी को कुछ मैसेज दे सकूं। मैं ये फील करता हूं कि मैसेज जो है वो अगर आपकी फिल्म में अपने आप आ जाए, हंसते गाते आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई विल नॉट गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन और मैं अपनी फिल्म के स्टाइल को कभी ये नहीं चेंज करूंगा या करना चाहता हूं कि उसमें मुझे कुछ मैसेज देना है। मुझे लगता है कि मैसेज देने के लिए इतने बड़े बड़े वली आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, अगर उन्हीं के मैसेजेस को हमने ढंग से सुन लिया होता तो आज हमें किसी मैसेज की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो मैसेज जो है लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसमें से 10 लोग ये कहते हैं कि यार फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा है, बट मेरा जरा बिलीव कम है इन मैसेजेस की तरफ। मेरा बिलीव है कि हम जो लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सवाब है कि आज की दुनिया में जब लोग इतने परेशान हैं और आज वो 2 घंटे जाके अपनी फिक्रों और मुसीबतों को भूल कर इंजॉय कर सके, तो इससे बड़ा मुझे नहीं कोई लगता है मैसेज है। See, I'll tell you my upbringing. I'm a Malayali who grew up in Ranchi. Okay, I have seen, I've been one of the earliest fans of Shola Shabnam, to be really honest. That dealt at that which Sir wrote, and वो भी एक टाइप के करप्शन और सबके बारे में बात कर रही थी। लेकिन मेरा एक one thing that I believe in, I feel that there are two ways of telling a joke. One is I can tell people laugh, okay, and the second thing is I can tell a joke, let people respond. So I think that for me, yeah, I mean, you have your own ideas about things and every opinion about everything, but you cannot start something saying that chalo aaj main iske bare mein, let's talk something. For me, if Jalsa is anything about, it's about गाड़ी अगर आपकी मुद्दा अगर आपकी गाड़ी के नीचे आएगा तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? So it's about moral dilemma, but beyond a point we don't want to yes, while we are telling the nuancing, there might be certain things that might come out, but idea is to strike that real balance here. Like if someone asked me saying that why didn't you send Jalsa to festivals, and I said that Holi pe release hui thi, Amazon Prime mein isse badi kya release hogi, festival hi saying that. So I feel that is it shouldn't be the obvious way of looking at things. The story should deliver, and then I think everything else will follow. You cannot control the interpretations, is what I'm saying. Actually, I'm going to take off from what Suresh sir only said when it comes to upbringing.
As you know already, you know me from before, Anuj. My dad's Parsi, my mom is Gujju. Yeah. So there is perpetual conflict about everything around. Even my friends are very mixed. So everything comes down to conflict, and a Thursday was also that conflict. And sorry to say, it's a conflict that's not going to have a resolution. So that's where the idea was born of what I want to say. More than making a change, it's about the awareness as to what is actually happening. What got difficult was how to weave a thriller around it. And when the thought came that, okay, we'll take a play school teacher that takes people hostage, I mean, 9 out of 10 people said, to pagal ho gaya. Versus, I said, okay, let's write it down and see what happens. And that's where it started. And obviously, the prime minister is not going to go into a conflict zone. That's the fantasy part of the film. I mean, it's a film at the end of the day. We have that liberty to take that extra step to show something absurd, which I think even in the next film is going to be what I'm writing is a little absurd, but I'll take the leap. If it works, well and good. If it doesn't work, then just go back home. What else? No, it definitely worked. Huh? I think it definitely worked. I think all the This respective time, let's see what happens next time. no, touch wood. I'm sure it will definitely work out well. But I think very well said, and I'm going to use what you said, Bezu, to segue into my next question because I think Bhool Bhulaiyaa 2 की जो high success थी, I think वो काफी prove किया है कि अभी भी एक बहुत बड़ी डिमांड है प्योर कमर्शियल हिंदी सिनेमा के लिए और डिस्पाइट बीइंग सच अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स ड्यू टू कोविड अनीस सर क्या ये सही होगा कहने के लिए कि ये एक रिस्क था भूल भुलैया 2 because obviously so many expectations people had from the first one. In fact, we had spoken about it actually at length as well. तो वो एक confidence, what gave you that confidence with भूल भुलैया 2 and how sure were you कि मतलब ये फिल्म चलेगी ही चलेगी? अब मुझे लगता है कि फिल्म कोई भी हो, फिल्म बनाना ही रिस्की काम है बिकॉज अब ऐसा है कि अगर आपने एक सक्सेसफुल फिल्म बनाई है तो इट इज लाइक ये करिश्मा है, मतलब ये बहुत मुश्किल काम है. तो फिल्म बनाना अपने आप में रिस्क है एंड ये एक आपका कन्विक्शन होता है एज ए फिल्म मेकर कि आप जो ये बना रहे हैं तो एक कैलकुलेटिव रिस्क हम जरूर लेते हैं कि यार अगर स्टोरी बहुत अच्छी है, हमने स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा किया है और डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हैं, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं एंड वी आर इंजॉयिंग, तो ये लगता है कि नहीं ये फिल्म जो है वो सक्सेस होनी चाहिए. इसलिए कि अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा हुआ है कि इफ यू वांट टू मेक अ सक्सेसफुल फिल्म यू रिक्वायर्ड ओनली 3 थिंग्स. नंबर 1 स्क्रिप्ट, नंबर 2 स्क्रिप्ट एंड नंबर 3 स्क्रिप्ट. सो मेरा पूरा बिलीव होता है स्क्रिप्ट पर. व्हेन आई वाज मेकिंग नो एंट्री तो मुझे लग रहा था ये कॉमेडी बहुत अच्छी है, ये नहीं लोगों ने देखी है, बहुत मजा आएगा. व्हेन आई वाज मेकिंग वेलकम तो एक बहुत प्रेशर था, लोग कह रहे थे कि अनीस यार ये कॉमेडी जो आपने बनाई नो एंट्री इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है. बट मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी बेस्ट फिल्म नहीं थी नो एंट्री, शायद बेस्ट मुझे और करना है काम आगे. तो मैंने जब वेलकम लिखी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड और मैंने जब मेरे एक्टर्स को सुनाई, चाहे वो नाना जी हों, चाहे अनिल जी हों, चाहे अक्षय हो, चाहे फिरोज खान हो, दे वर ऑल एक्साइटेड एंड बहुत अच्छी तरह हमने फिल्म बनाई और वो बहुत बड़ी हिट हुई. उसके बाद सिंग इज किंग में वही प्रेशर, मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर आप पे ये प्रेशर आता ही रहेगा, इसलिए कि आपने जब पुराना काम जब किया है तो अच्छा काम किया है. लेकिन मुझे लगता है वो प्रेशर बहुत जरूरी भी है और अगर ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कुछ तो वो मुझे लगता है बड़ी खुशी की बात है. मुझे उस दिन बहुत दुख होगा कि अगर मैं कोई फिल्म बना रहा हूं और कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, उनको कुछ लग ही नहीं रहा. तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको एक मोटिवेशन देता है अच्छा काम करने के लिए. एंड आपको जो रिस्क है वो अगर आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, जब मैंने फिल्म बनाई थी प्यार तो होना ही था, उस वक्त अजय देवगन की सिर्फ एक्शन फिल्में आया करती थी एंड सबने मुझे कहा था कि अनीस ये एक लव स्टोरी है विद अजय, बट आई वाज वेरी श्योर कि बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म है एंड अजय इज सच अ वंडरफुल एक्टर. तो लकीली मेरी सारी फिल्मों में मेरे जो एक्टर्स हैं उन्होंने इतना, मतलब मैंने जो लिखा है आपको बताऊं वो अगर 19 होगा तो उससे ऊपर जाके 20 पे काम किया उन्होंने. तो वो आपको एक स्क्रिप्ट पे विश्वास होना चाहिए एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर, कि जो, क्योंकि लास्ट में ये है कि अगर अच्छी फिल्म है तो सारे लोग अच्छे लगेंगे
और अगर फिल्म आपने खराब बनाई है तो अच्छे से अच्छा एक्टर उसमें बुरा लगेगा कि नहीं यार काम नहीं किया है. तो वो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू मी. Very, very well said. And in fact, I was going to come to Suresh and Bezu actually. Both Jalsa and A Thursday were highly praised and loved on OTT. I still can't stop talking about it. And I think a lot of people on social media still are also talking about it. But, how do you think the films would have fared had they been released in cinema? Do you think there is a clear distinction between content consumed in, at the cinema versus in the domestic domains? Do you think that there is that difference in the type of content? Suresh, would you like to go first? So I had two. My first one was a theatrical. Okay, Tumhari Sulu was theatrical, and it did well. Okay, in terms of its business and numbers and all of it. Second one, because of the times that we were coming in. See, there were a plethora of films that were waiting to release. And what happens when you make a mid-sized film? You need to get a window for people to, because these days kya hota hai ki Friday you're deciding the fate. Friday, Saturday, by Saturday, Twitter is active, everyone is active, they've decided the fate of it. So for a smaller film, you need a breathing space. And then there were so many films to be released. My hope was that every film should get a respectable release, whether in whichever platform. Okay. Absolutely. So for me, the way I took it up was that which is the best platform for me, which can give me a good sizable and be realistic about it. Let's be very realistic. It's not, people after a particular their decision makings have changed. So we are constantly evolving right now. I think Anees sir is the only one who's changed the tide this year. I mean, in terms of successfully in that beginning. So I think it's early times to decide that what is working and what is not. But yes, we definitely took that gamble कि देखते तो सही है कि इस कुएं में पत्थर डालने के बाद आवाज आती है, नहीं आती है, पत्थर पानी में लगती है, कोने में लगती है. So it's like that. So it's one of those decisions. Replying to your questions of whether it should have done good in theater. Okay, I think the business of cinema, no one can say what will work and what will not work. I would always say that it will work. I think my trajectory thodi alag thi in this case, because when the script reached in front of Mr. Ronnie Screwwala, he says, okay, I like it, let's make it, it'll be digital. So my head said, bhai, chupchap haan bol de, don't do herogiri karna. I said, yes sir, as and how you want, digital to digital. So I think that's where Thursday's fate was sealed, and we stuck to it until people saw the edit, and then towards the end it started going, "Arey, isko theater mein release karna tha." I don't believe so, because I have, in that time, that starting January, February of 22, I went to the theater to watch films that were coming out. I saw Bhool Bhulaiyaa 2, I saw RRR, I saw KGF, and films like that. What I realized is people are coming in droves, in big groups, to watch these films, and they are enjoying themselves. Either they are laughing, either they are whistling, either they are chit-chatting. It's become an event. Yeah. And a film like Thursday, it's not an event. So in my heart of heart, I think it would have misfired if it was in the theater. That's as honestly as I can say it. But I mean, okay, so you can say Kashmir Files was an anomaly, because that was so tied to a sentiment that, including me, everybody went to the theater to see it. But now those films come once in 10 years. That's true. Yeah. Very rare. And I think the story as well that it highlighted, it was a very important story which needed to be told as well. I personally, I think before pandemic, it was a different thing. Yes. And after pandemic, it was a different, complete scenario. Because अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि कुछ फिल्में आप ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये फिल्में जो है हम एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को ही करना चाहिए, एंड कुछ फिल्में आप सोचते हैं ये स्क्रीन पे आनी चाहिए. इसके पहले, पैंडेमिक के पहले ऐसा था नहीं, इसलिए कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो टिकट्स जो है वो थिएटर्स की इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा कि एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो फैमिली को लेके जाए फिल्म देखने. तो लोग जो है पहले फिल्में देख लिया करते थे, अब उनको ये लगता है कि अच्छा 1-2 महीने बाद पिक्चर आनी भी है ओटीटी पे, चलो बाद में देखेंगे.
तो इट इज मतलब डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है। स्क्रीन पे जो बड़े स्क्रीन पे फिल्म बनाना है बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। और अच्छी अगर स्टोरी है और अच्छा कंटेंट है तो आपको डेफिनेटली बनाना चाहिए। मैं खुद बनाना चाहूंगा कि कोई अगर मेरे को ऐसा लगता है कि फिल्म मुझे बनानी है और मुझे लगता है कि वो ओटीटी के लिए ठीक है, तो आई विल मेक ऑन ओटीटी, बिकॉज ओटीटी इज आल्सो अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आज कितने एक्टर्स और कितने लोगों को बढ़िया काम दिया और कमाल कंटेंट आ रहा है। जैसे अभी ये दोनों ने जो फिल्में बनाई, इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म्स। एंड सल्लू तो खैर मैंने स्क्रीन पे देखी थी, आई लव द फिल्म। बट मुझे लगता है कि पैंडेमिक के पहले का सिनेरियो अलग था, आज का बहुत अलग हो चुका है। No, I'm glad you mentioned this actually because I was going to ask you this slightly later on, but I think it makes sense to pose this question now. तो क्योंकि scenarios बदल चुकी है, but क्या वो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर अभी आपको डराती है इतना? Does the pressure of box office scare you all as filmmakers now actually? I think Anees will come to you first. मुझे मुझे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो बहुत डर आती है। क्योंकि क्या है कि फिल्मों के अंदर जो हमारी लागत लगती है वो बहुत बड़ी है, और अगर जरा भी नुकसान होता है तो गालियां बहुत ज्यादा पड़ती है, और गालियां तो किसी को खाने में अच्छा नहीं लगता है। और एंड लोगों को उम्मीदें बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत दुख होता है कि उस एक्सपेक्टेशंस पे हम उतरे नहीं पूरे। बट जहां तक मुझे लगता है फिल्में बनाने का ताल्लुक है, जो राइटर्स डायरेक्टर होते हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपना 100% दे के फिल्में बनाते हैं। उसमें से कुछ वर्क करेंगी, कुछ शायद नहीं करेंगी, वो अलग चीजें हैं। आपके हाथ में है एक अच्छी फिल्म बनाना। अब उसको कमर्शियली कितना सक्सेस होगी उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नसीब भी होता है लोगों का, सबका जुड़ा हुआ मिला हुआ, तो वो बहुत है। लेकिन यस, फिल्मों को लेकर जो है, फिल्में जब हम बनाते हैं तो कॉन्स्टेंटली ये एक थॉट जरूर रहता है कि ये बड़ी हिट हो। My first film, it was tremendous pressure. And I remember we were in a meeting with Akshay sir, and Akshay sir said that, yaar, tum log ye time pe mat release karo, wait for a bit. Because we released in the middle of Avengers and Student of the Year 2. So, and that was that Avengers which did the 2 billion. So I'm like, yeah, we are going to kill ourselves. Anyways, it happened. But then that is the moment I thought, yaar, MBA kar lena chahiye tha, because abhi ho gayi, ticket cut gayi hai, ghar jana padega. So the pressure is tremendous. There is no two ways about it. And now I had an experience of releasing a Thursday on an OTT platform. And honestly, there was no pressure this time. I was just hoping that people like it. And for me, it comes down to a point where, okay, because we've come from nowhere, we've come from outside, we've AD'd for 10, 12 years to get to where we are today. And you're thinking, okay, boss, I hope I do well enough to book the next job. Yeah. So that constant fear is always there. But somebody, watched a Thursday and told me, now don't worry, now you can afford 5 flops also. I said, I don't want to do that. I said, but they are right. They are absolutely right. You have made a beautiful film. I thank you, sir. And that is important. वो तो बिजनेस है, वो तो बहुत चीजों से आपने बताया कि 2 फिल्मों के बीच में आप आए, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. इट इज नॉट ठीक है, समटाइम डिसीजन लेना पड़ता है, बट इट वाज नॉट अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन. Yeah, it wasn't. I just want to go back to the last question where you said that whether Jalsa would have done well in theatrical. Yeah. I now think it should have, because my floor was next to Bhool Bhulaiyaa 2. As per Vastu, it should have worked. Yeah. No, so in terms of course, I think even if you make a small piece of work, the first thing is that we are in the business of judgment, and unnecessarily we put ourselves out there to get judged, and then there is a monetary angle to it. Pressure will always be there, but I'll also say that there is no bigger high, because I've experienced both, and both have got its own beauty to it. Okay, like OTT, what happens is I could get a message as good as tomorrow, and it would feel that the film was just released. Okay, someone just stumbled into it in some corner of the world and they message you. With theatrical, I think my biggest high was when I was with my family watching a film in a houseful theater and no one knows that you're there. Okay, that high you can never. And when you see collective laugh and collective gasp,
There is no bigger high than that. So, I mean, but that pressure, I would say that it will always be there till the time you're honest to your craft. Okay. The only thing is in OTT, you just know that you've secured everyone's money. Right. Right. Yeah, I think that's very interesting actually. And I think if we talk about the change in trends and the shift that we're seeing now, of course, Dekho, stars though are amazing. We all love the stars. And I think that there's this whole, of course, I don't think they can never ever be a Bollywood without the stars. I mean, I think it's something which I've grown up watching, which has drawn me to this industry in the first place. But I think we're seeing more actors emerging within the notable faces now, and I think जो combination आप लोगों ने पेश किया है वो काफी distinct है. For example, the combination of Shefali, Shah, and Vidya Balan in Jalsa, Tabu and Yami Gautam in never before seen avatars and performances in Bhool Bhulaiyaa 2 and A Thursday respectively. So क्या क्या फैक्टर्स आप लोग सोचते हो इन कास्टिंग दीज एक्टर्स एंड कितना इम्पोर्टेंट था एक अलग रूप दिखाना इन एक्टर्स को आपके फिल्म के जरिए. सो आई एम गोना स्टार्ट विद सुरेश एक्चुअली दिस टाइम. I'll be very honest. When we used to see, I mean, as a bacha, when you're watching film, मुझे titles बड़ा अच्छा लगता था कि विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन. So, or like Saudagar, you have, Rajkumar Saab and Dilip Kumar. So I said that I like the idea that, so we put a teaser out there like that. Vidya Balan and Shefali Shah. Ho gaya. This is a good thing. Okay. Just to go back to IMDb in terms of saying that, अच्छा, ये इन दोनों के साथ film बना है. So, jokes apart, but that really motivates me. I feel that when you have such fantastic actors, and they have their respective following and fans and all of it, you don't want to let them down. You are their fans, so you want to give their best. So casting does play a huge role, because sometimes I try writing with them in mind, because for me sometimes it works, because it just helps me guiding through the way they talk and the way they pause and all of it, because I talk while I write, so it kind of helps me. It is very, very fundamental. Yeah. It's something that, because it should inspire you even as a maker, saying that, come on, do justice to their talent. For me, I think it was casting somebody like Yami was trying to do an opposite, because she's the quintessential, pretty looking girl next door. I said, let's give her a gun and see what she can do. I mean, that was the thought in our heads when we were thinking of which actors to go with. And I thought Yami would be the ideal choice. Of course, then it all came down to boss, whether she'll say yes or no, we don't know. I said, send it. Na bolenge. I'm fine with going all the way down the pecking order. But she did say yes in the first go only. And she said, don't send it to anybody else. I said, okay, sounds good. So that's where I think it got locked on a Zoom meeting, because we were in the middle of lockdown, strangely. So yeah, I think that was casting is important. Like I felt I made a weird cast when it comes to Neha for this character, simply because I wanted that slightly anglicized feel, because I know a lady cop who's actually quite anglicized. She's a Bandra cop. So I like that character. I like the way she would switch to English and switch to Marathi in a heartbeat, and she was damn good and very funny. So I thought Neha would be extremely good, and a lot of the lines that went to her were in English also, because I knew it's an OTT film. I can take that liberty. She called me back saying, listen, I'm a Delhiite, no? I said, are you? She's like, my Hindi is flawless. I said, are you serious? I thought you were very anglicized. She's like, balls, my Hindi is very flawless. My Hindi is flawless. I said, okay. So then we changed the lines and we built the character together. And of course, she getting pregnant and all became a separate story. So that again went into changes. But that was, yeah. So I think that just, as Sir said, casting is essential, because they will break your film. If it's wrong, they will break your film. There's no two ways about it. Actually, I'm a fan of Tabuji. Tabuji is a fantastic actor, and unfortunately, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था. And we know each other. We are friends from last I don't know how many years. And जब भी हम मिलते थे कहीं भी पार्टी में हर बार, तो तबू जी कहती थी, अनीस भाई,
when we are doing films. और मैं यही बोलता था बस अभी कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए. बट वो चूंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो मैं एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर कि मैं उन्हें कोई ऐसे रोल में नहीं लेना चाहता तो जो ऐसा ही हो, या उन्होंने काफी उस तरह की फिल्में कर ली हो. तो जब ये रोल मेरे जहन में आया तो मुझे अलावा तब्बू जी की किसी का ख्याल ही नहीं आया. मैंने उन्हें फोन किया और मैं फोन पे उनको कुछ 1.5 मिनट मैंने कहानी सुनाई. आप अच्छी भी हैं, आप बुरी भी हैं. तो उन्होंने कहा अरे बहुत मजा आएगा, चलो मैं आती हूँ बॉम्बे, हम लोग मिलते हैं. और जब मैंने उनको नरेशन दिया तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड. और उसके बाद उन्होंने जो काम किया फिल्म के अंदर, मुझे लगता है कि तब्बू जी के अलावा किसी भी एक्ट्रेस को इस रोल में मैं लेता अगर अंजुलिका और मंजुलिका में, शायद वो उतना अच्छा इंसाफ नहीं कर पाती. बिकॉज शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. एंड शी इज, आई टेल यू के मतलब वो पूरा सुनती हैं, समझती हैं. एंड उनके लिए ये है कि डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उनको जज्ब करना. तो आई थिंक वो किसी भी अच्छे एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये समझें कि जिस कैरेक्टर को आज हम निभाने आए हैं, वो कैरेक्टर शायद पिछले 6 महीने या 8 महीने से इस आदमी के जहन में है. तो वो बात वो समझती हैं, और इतना अच्छा उन्होंने काम शायद इसीलिए किया कि एक तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो बात को पूरा समझी उन्होंने. तो मेरे लिए हमेशा एक्टर्स जो हैं, स्टार्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं कि मेरी फिल्म मैं बहुत बड़ी बनाना चाहता हूँ ऑलवेज. बट मैं ऐसे स्टार्स के साथ काम करना चाहता हूँ जो अच्छे एक्टर्स भी हों. और लकीली मैंने आज तक जितने लोगों के साथ काम किया, देवर स्टार्स एंड अ ग्रेट एक्टर्स. फॉर एग्जांपल, जब मैंने नाना जी को लिया जिस रोल में, तो नाना जी ने उस तरह का रोल कभी नहीं किया था जो वेलकम में किया. तो वो हैं, फिर अनिल जी हैं, हमारे अक्षय जी हैं, सलमान जी के साथ मैंने किया है नो एंट्री, और बहुत सारी फिल्में. तो मुझे लगता है कि एक्टर्स की जो चॉइस है, वो सोचना कि इस रोल के लिए कौन सही होगा, कौन गलत होगा, और कौन आपको चाहिए, वो समहाउ जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके जहन में एक बनना शुरू हो जाता है कि इस तरह के एक्टर्स हैं. और जिस तरह सुरेश जी ने कहा, मैं आज भी लिखता नहीं हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं चलते रहता हूँ, मैं डायलॉग बोलते रहता हूँ. तो अगर नाना जी की डायलॉग है तो वो कुछ नाना जी की स्टाइल में होंगे, उनके अलग पॉजेज होंगे. अनिल जी के होंगे तो अनिल जी के होंगे. तो इसीलिए वो डायलॉग जो है वो आपको बड़े मतलब किताबी नहीं लगेंगे कभी भी. मेरी फिल्मों के जो डायलॉग्स हैं वो ऐसा लगेगा कि ये आम लोग आपस में बात कर रहे हैं, और यही कैरेक्टर, इस तरह का कैरेक्टर यही बात करेगा. तो वो एक्टर्स को चुनना, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और अगर सही स्क्रिप्ट में सही एक्टर्स आ जाए तो आपकी आधी जंग आप जीत जाते हैं. जी. एंड आई थिंक ऑल्सो मैं एक्चुअली ये कोविड से लिंक करने वाला था, ये अगला क्वेश्चन एक्चुअली. बट आई थिंक ये अगर देखा जाए तो हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और आप तीनों के फिल्मों में there was a very strong portrayal of grey characters. Bezo, for the longest amount of time in A Thursday, we thought Yami Gautam was a grey character. She had antagonistic shades to her for what she did, because of course what she did was immoral. It wasn't exactly the greatest thing ever. Suresh, even though she was of course a survivor, Suresh, of course, with the decisions that Vidya, Balan, and Shefali Shah takes or make in the film, of course, are very questionable and very debatable. Even the ending that you have, it's very open ended as well, which I think has made us really ponder what's happened next. And I think, of course, Anees, I mean, needless to say, I mean, Anjulika and Manjulika, again, ग्रे शेड्स. सो क्या आपको लगता है कि ये जो एक ग्रेनेस है जो उभर के आ रही है सिनेमा में जनरली, do you think it's pushed you as filmmakers out of your comfort zones as well? Suresh, I'm going to begin with you. I think to write great characters, it's great fun because they don't take decision like you. They take decisions as per, and they're not conservative in their decisions. So I'm saying in a way, in Jalsa, for example, it's a lapse of decision where she leaves the venue. जब माया गाड़ी लेके चली जाती है, ओके, एक लैप्स होता है, और शेफाली पैसे ले लेती है, वो उसका लैप्स है. Just saying, they are survival. They are coming from the place of survival. Every character, black or gray, they come from a place कि मुझे बचना है. Okay. It has to survive. So what is interesting to write about such characters is maybe because Sulu was an over-diabetic, sugary, very good character. Okay, I wanted to kind of indulge in something which is helps me
delve into the other sides. But writing gray character, that's why the best remembered villains, okay, are always because they take atrocious decisions there. They take random decisions, and that can become fun to write. I'm not saying in real life, okay. Yeah. I'm saying because the decision what they take decides the course of the script. Yeah. I think, like what Sir just said, I think it's a lot of fun to write these characters because you are going to base their decision of what the character is going to do is if you in real life ever got the chance to do it. Yeah. You're not going to be able to do it, but your character can. So in those aspects, you basically channel all your evil, which all of us have, into the character, into a sense that go crazy. I'm saying if you look back, whether it is a Batman or a Vijay, Dinanath Chauhan, all of them, they're all great characters. They've all come, and you always enjoy watching somebody who's going to step over the line, especially the way the world has shifted in the last 4 or 5 years from my limited understanding, is even on screen, basically an RRR or a KGF and all this violence is working in the sense that there's a lot of aggression in people and you put it out on screen, you're letting them live through that character. That I'll take on 30, 40 people and blow up a building. People are lapping it up as entertainment and hopefully don't go and repeat it in real life. So I think you let them live through these characters and it'll hopefully keep the world a little safer than what it is right now. Right. So in a way, you're saying it's like escapism, right? It's almost like a different form of escapism. Is that what you're saying? Completely escapism. Like most of Anees's films is escape. You go and enjoy it, no? Like even film like No Entry and all are considered classics today because you've gone out, you freaked out, and you repeat these jokes amongst your friends. There's always a recall value. So cinema will leave an impact in a sense. Somebody is going to go and repeat the wrong thing. We've heard a lot of stories ke film mein dekha aur jaake kar liya, but the number will reduce if you let them enjoy it on screen and not repeat it themselves. Interesting. Okay, that's a very interesting perspective. मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ग्रे कैरेक्टर्स लिखने में बहुत मुश्किल आती है. मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त लगा था दीवान की लिखने में बिकॉज आई एम बेसिकली बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा हंसने वाला, खुश रहने वाला, एंजॉय करने वाला, अच्छी बात कर, ऐसा करने में मुझे बहुत लिखने में आसानी रहती है. लेकिन ये जब कैरेक्टर्स आते हैं ग्रे तो नेचुरली मुझे वो सोचना है जो शायद मैं कभी नॉर्मल तरीके से सोच ही नहीं सकता हूँ. जैसे सुरेश ने और बेजाग ने भी बताया कि ये लिखना बहुत बड़ा फन होता है इन कैरेक्टर्स को, इसलिए कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए लिख रहे हैं जिसको आप बिल्कुल पसंद ही खुद भी नहीं करते हैं, आपको खुद वो कैरेक्टर्स नहीं पसंद है, लेकिन वो जब लिखना है तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है. बट वो मुझे लगता है कि ये एक आपका एग्जाम होता है एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, कि आप जो चीज में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, जिस तरह के लोगों में को मिलना नहीं चाहते हैं, उनको इतना सोचना पड़ता है आपको और उनको उस तरह पोर्ट्रे करना पड़ता है, तो बहुत जबरदस्त मजा भी आता है. बट ये मुझे पर्सनली अपना नेगेटिव कैरेक्टर्स लिखने में बहुत तकलीफ होती है. बहुत तकलीफ होती है. No, definitely. And I think on a final note also, we're living in very uncertain times. जैसा हमने बात की पैंडेमिक के बारे में, अनीस सर ने बताया कि सिनेमा ने काफी बदल चुका है, of course, since the pandemic. But I think, of course, independent content creation का तो rise हो ही रहा है. लोग ज्यादातर इंडिपेंडेंट ही बना रहे फिल्में, and it's wonderful to see that. But I think it is a lot of pressure as well on the commercial space, क्योंकि और भी ज्यादा अनिवार्य हो चुका है कि major producers back your films as well, especially if it's a commercial one. So how do you as directors ensure कि आपकी जो voice है, एक पहचान है as an identity as a filmmaker is not compromised while securing a big producer? So Behzad, I'm going to go with you because I think it'll be wonderful to hear your perspective on that. See, as I told you earlier, right now it is my mentor, Anthony D'Souza, when I did my first film. There is a lot of resistance when you're doing your first film because everybody knows better than you is what everybody believes. Yeah. So he had told me that it's your first film, keep your mouth shut, say yes, say sorry, say thank you, and get the film made.
See to it you get that one foot in the door. After that, we'll figure life. So that has gotten very stuck in my head that until you reach a point, until say you reach a stature as Anees sirs, where the difficulties to put together, because you have a body of work, there is so much success behind you where you can say, okay, you know what? I want to meet these people and run my script. Until you reach that stage, somebody like me, I think has to sidestep a little. There has to be a little bit of compromise to get, because we've bounced a lot of ideas. Everybody will say, okay, no, not 30. You have to do it in 22. Then you fight a little and somehow you'll get 25. You know what I'm saying? So that is a little battle that I think has to go on, because a lot of people believe that cinema is purely business, while we always will believe that cinema is passion, but there is a big money involvement. So it is, I personally believe it's a 70-30 right now in favor of business. Okay. So Right. with the times that we are in, I think it's going to become 80-20 now very soon. But we have to accept that and we have to live in it, because there's nothing else to do. I mean, already past that age where we can choose another career option. It's not going to happen. So somehow it is the best way to, join hands, figure it out and do it together. That's the only way to do it now. So what, like Tumhari Sulu was produced by T-Series and Ellipsis. Jalsa was produced by Abundancia, T-Series and myself. I mean, I got into it because, and not purely, I'll tell you what, I think I will not make a film because I'm supposed to. I'll make a film because I want to. Okay. No one can force you to, because see, and let's not forget that it's the costliest form of art. Okay. And there is a business angle to it, whichever medium that it can go. The thing that I think, the fact is, it depends upon how much, there should be no difference in vision in terms of eventually where do you want to land your film. Like I am very clear that whatever size of film I make, I want reach. Tumhari Sulu could have been a very small reach. I wanted a T-Series into it, because otherwise I would not have gotten the kind of reach would have with the Banja Tu Meri Rani that happened. Okay. Which I snatched the song from Anees sir, I'm telling you. So I'm saying, so that song gave me that reach. So I need reach. For reaching that, there will be some negotiation, there will be some bargaining, and I think it's worth it. I completely agree with what Behzad was also talking about. Like, it is a form, and there will be exchanges, and you just make sure that the product, you don't dilute it. That's the only thing where you come from. मैं ईमानदारी से बताऊं कि सारे प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि अनीस इज अ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर. मैं वो सारी डिफिकल्टी समझता हूं कि कितना पैसा किस चीज पे लगना चाहिए. आज मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं कि डायरेक्टर के साथ साथ मुझे प्रोडक्शन की बहुत बारीक बारीक चीजें भी पता है. मुझे मालूम है कि कहाँ अननेसेसरी पैसा जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए. एंड मेरे प्रोड्यूसर्स जो हैं, चूंकि मैं बहुत ही ऑनेस्टी से, उनको पता है मैं बहुत पैशनेट होके फिल्म बनाता हूँ, तो मैं जब सुनाता हूँ तो उन्हें पता है कि इस फिल्म में कितना खर्चा होना है, क्या होना है. अब वो मेरा अपने पे छोड़ते हैं कि अनीस उसको कैसे आपको कम में करना. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट भूल भुलैया. भूल भुलैया जो है वो बहुत मुश्किल में हमने फिल्में बनाई, बिकॉज हम लोग जहाँ जाना चाह रहे थे जा नहीं सके बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. एंड हमने एक सेट के ऊपर कंप्लीट यहाँ पे सेट लगा के फिल्म बनाई है, और अबाउट 62-65 डेज में फिल्म बनाई है, जबकि हमारा प्लान कुछ और था बड़े लेवल पे. लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक मुझे पता था कि फाइनेंशियली लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, और मैं उस कॉम्प्रोमाइज को हमेशा करना चाहता हूं जो कॉम्प्रोमाइज मेरे स्क्रीन पे दिखाई ना दे. मैंने कई फिल्में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस के साथ बनाई हैं, लेकिन ये मैं मेक श्योर करता हूं कि वो कॉम्प्रोमाइजेस स्क्रीन पे दिखाई ना दे. इसलिए कि मुझे लगता है कि फिल्म बनाने का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है. आप एज ए पैशनेट फिल्म मेकर बहुत कुछ आप सोचते हैं और आप चाहते भी है करें, लेकिन सम टाइम लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, या ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो उसका आपको एक वे आउट निकालना पड़ता है. तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था रेडी, तो उसमें मेरे कुछ 20-25 एक्टर्स आ गए थे, और जब सलमान भाई आए तो उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हो रखी थी लाल. एंड आई थॉट कि यार ये कैसे होगा, शूटिंग हो ही नहीं सकती थी.
तो फिर मैंने प्रोडक्शन मैंने बोला मुझे एक आधा घंटा दो, तो सब लोगों को पता था शूटिंग खत्म होने वाली है, लेकिन मुझे अंदर बहुत तकलीफ थी कि यार 20-22-25 एक्टर्स आए हैं और उनका पैकअप हो जाएगा, शूटिंग ही नहीं हो पाएगी, बहुत नुकसान होगा। तो मैं बोला मुझे आधा घंटा दो, तो सब यही सोच रहे आधे घंटे में अनीस क्या कर लेगा, आंखें तो ऐसी है कि शूट हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कुछ एक आइडिया निकाला और मैंने कहा कि एक काम करो भाई, 25 चश्मे मंगाओ ब्लैक। मैंने सारे एक्टर्स को 25 चश्मे लगवाए ब्लैक, और मैंने एक डायलॉग डाला सलमान भाई का, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अभी आप लोगों से जो बात कहने वाला हूँ उसको सुनने के बाद हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैंने खुद भी चश्मा पहना और आप लोगों को भी पहनाए हैं। और फिर वो सीन चालू होता है। तो मुझे लगा कि ये इतना छोटा कॉम्प्रोमाइज है कि ये मैं कर लूं और ये फनी भी लगेगा। एंड बिलीव मी, वो शायद मैं बिना चश्मों की वो सीन करता तो शायद इतना फनी नहीं होता। उसमें दादी ने भी चश्मा लगाया हुआ है, दादा ने भी लगाया हुआ है, एवरीबॉडी इज इन काला चश्मा। तो ये चीजें मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं अपने एक बजट को ध्यान में रखूं फिल्म को, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना जितनी बड़ी मैं फिल्म बना सकता हूँ वो मैं बनाऊं। Right, right. And I think this is a very one beautiful way to, I think, conclude our session as well. Is that I think one thing that you all are testament of is grit, and hope, and a lot of hard work. Whether it's Anees, who has an amazing legacy behind him of the work that he's done, whether it's Suresh and his wonderful vision of telling realistic stories and gritty stories, and of course Behzad, who also tells these real and gritty stories, but presents them in a very, almost in a way, a very fantasy way. Like I remember when I saw Thursday, I rang Behzad and I told him it reminded me of Michael Bay's movies. And it's wonderful ऐसा how, budget भी मिल जाए, I'll be very happy if it's a Michael Bay movie. well, that is the dream. I think that is the hope, I think, and I think 2022, you all have contributed to this year in many, many big ways. And I think I'm very grateful, as not only as a reporter, but also as an audience member, to see great works now emerging in Hindi cinema. And I hope and pray that we get to continue to see more great work from all of you. So thank you so much, Anees sir, Suresh sir, and Thank you very much. Talking very Thank with you. Suresh Bhai and Suresh ji and Bezak and you, Thank and you. it was nice talking. Thank you very much. Thank thank you you. so much, sir. Lovely Thank meeting. you to Thank both you, of you. sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Bye bye. Bye, guys. Suresh Bye. ji, namaskar. Suresh ji, thank you. Bye. Bye. See you, sir. Thank you so Thank much. you, sir. Bye-bye. Thank you, sir.